Yes, good afternoon, guys. Am I audible? Please confirm. Please confirm if I am audible. Okay, so let's start the session now. So, how is everyone? I hope everyone is fit and fine. And गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, गांधी जी के जो विचार थे, जो आदर्श थे, अगर उसका हम 0.1% भी अगर अपनी एक्चुअल लाइफ में अगर उसको फॉलो करते हैं, उतार लेते हैं, तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है। साथ के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और साथ के साथ इस देश को जो आज हम एक फूड प्रोडक्शन में जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो आज हम दूसरे देशों पे अपने बेसिक फूड रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका भी हम कह सकते हैं कि श्रेय जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को ज़्यादा है, जिन्होंने ये नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो इन टुडेज सेशन we are going to discuss that the answer writing part. Answer writing part, it is one of the most crucial part also, and at the same time students have lots of curiosity about this particular part also कि सर आंसर लिखना है, so कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, what should be our basic kind of thing to proceed with that thing. Okay, so बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं, तो ऑब्वियसली सीरीज में आते हैं कि यूपीएससी में जो मेन एग्जामिनेशन है हमारा, our main examination, that is the most important decisive factor. मेन एग्जाम का स्कोर ही डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर गेटिंग कॉल फॉर इंटरव्यू और नॉट। मेन एग्जाम का स्कोर ही ये डिसाइड भी करेगा कि आप मेंस क्वालिफाई मतलब फाइनली क्वालिफाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दैट स्कोर विल बी डिसाइडिंग योर रैंक ऑल्सो। ठीक है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि भाई अप्रोच, जैसे कई सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट से भी बात की, तो उन्होंने यही बोला कि भाई अरे मेन एग्जामिनेशन रिटन पार्ट में स्कोर को इतना अच्छे लेवल पे मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं कि अगर इंटरव्यू के लेवल पे कोई प्रॉब्लम अगर हो भी जाती थोड़ी बहुत, तो वो उसको जो कंपनसेट कर देता है। दिल्ली में अदर जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन के जो हब्स है, सभी जगह पर एक बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिलती है, वो यही है कि भाई मेन एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर उठाओ। ओके, स्कोर वेरी वेल इन द मेन एग्जामिनेशन रिटन पार्ट, एंड रिटन का अगर स्कोर अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में अगर आपका थोड़ा बहुत कम नंबर भी रहता है तो भी वो मैनेज हो जाती है चीजें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू को लाइटली लेना है। ओके, इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Interview is also a very important aspect, but the point is like how we have to strategize our things, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है, उसके पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करेंगे, सो मेन एग्जामिनेशन इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मेन एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि राइटिंग एस्पेक्ट, जो राइटिंग स्किल्स है, दे विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। आप कैसा लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसी के बेसिस पे ही आपको जो स्कोर मिलना है। ओके, अब एग्जाम्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार ये मतलब उनकी क्वेरी होती है कि सर वी नो द टॉपिक, टॉपिक हमें पता होता है, बट कई बार क्या होता है उसमें कुछ टर्म्स लिखी जाती है, इलस्ट्रेट कहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे इलुसिडेट लिख देंगे, और लेट्स से दे विल राइट डिस्कस, इलैबोरेट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। देन व्हाट शुड बी आवर approach toward these type of questions? So इनको हम बोलते हैं keywords. These are called keywords. To be very honest, keywords they do play an important role. But अगर हम पूरे टॉपिक के हिसाब से अगर बात करते हैं, let's say for example continental drift theory and plate tectonic theory. So more or less 80-85% पार्ट तो आपको वैसा लिखना ही है। Yes, keywords की वजह से 10% 15% एक वेरिएशन चीजों में आ जाती है। So we can say yes, some in some context these keywords they play a very important role, while कई जगह पे क्या होता है कि सिंपल डिस्कस लिखा है,
अब डिस्कस लिखा है तो उसके हिसाब से थोड़ा हमारा अप्रोच लो हो जाएगा, एलैबोरेट है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंशन करके उस चीज़ों को लिखना पड़ेगा। अगर वर्ड आता है इलस्ट्रेट तो उसमें क्या होता है कि वी हैव टू गिव सो मेनी एग्जांपल्स, कई सारी एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इनको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कहीं पे वर्ड आ रहा है क्रिटिकली एनालाइज, सो ऑब्वियसली वहां पे जो है क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी जाएगा। अब देखो ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी कि मैंने बोला सर इलस्ट्रेट है, ठीक है, इलस्ट्रेट में एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव टू सी सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उन क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, please confirm that am I clearly audible to everyone? So let's start with the first question. Question number one. Question number one. Discuss the impact of green revolution. Discuss the impact of green revolution on agroecology, with special reference to salinization. So this is our first question. क्वेश्चन सबको विजिबल है ये बोर्ड पे? Yes, is this question visible to everyone? So discuss the impact of green revolution on agroecology with special reference to salinization. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा गया है, ठीक है ना, या किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो एक इस चीज को भी थोड़ा सा देखते हैं। सॉइल सैलिनाइजेशन, ओके, सॉइल सैलिनाइजेशन जनरली कहाँ होता है? कोस्टल एरियाज में होगा, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूंगा सॉइल सैलिनाइजेशन, दैट मींस दैट अ सॉइल इज हैविंग एक्सट्रीम एक्सेस ऑफ सॉल्ट कंटेंट। इन जनरल में सभी यही सोचेंगे, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा कि ज्यादा सॉल्ट कंटेंट सॉइल में कहाँ मिलेगा, so everyone will or most of you will answer that sir it will be found in the coastal regions. But guys, apart from this coastal region, like this is India, so in the northern part, especially Punjab, Haryana and western UP region, this region is also experiencing this problem of soil salinization. अब soil salinization की प्रॉब्लम कैसे आ रही है यहाँ पर? Because there is the issue of over irrigation. क्योंकि होता क्या है कि जो विलेजेस होते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, खास तौर पे ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, तो ये जो है एकदम फ्लैट रेट पे मिल जाता है, उसको कोई बिजली का मीटर नहीं लगा होता है। 100 रुपीज पर मंथ, 50 रुपीज पर मंथ, इस पे जो है आपको एक फ्लैट रेट पे क्या होता है, कनेक्शन मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है कि भाई पहले के टाइम में, अभी तो कंडीशंस काफी इंप्रूव हो गई है, बट काफी टाइम पहले तक ये भी कंडीशन थी कि गांव वगैरह में, विलेजेस में, देयर वाज नॉट अ सस्टेन्ड पावर सप्लाई। मे बी इन द एंटायर 24 आवर साइकिल द विलेजेस वर गेटिंग हार्डली 8 आवर्स और मे बी 7 आवर्स, 6 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। तो फार्मर्स जिन लोगों के पास ट्यूबवेल था, उन्होंने क्या करा कि उनको कनेक्शन तो मिला हुआ फ्लैट रेट पे,
अब वो क्या करते थे, स्विच ऑन करा आराम से कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी स्विच ऑन कर दिया आराम से, फील्ड को पानी मिल जाएगा। अब क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि भाई पावर जरूरी थोड़ी ना कि कम ही आएगी, कई बार ज्यादा भी आ जाती है, पता चला किसी दिन सप्लाई ज्यादा हो गई। तो ऐसा होता था कि प्रॉब्लम हुई ओवर इरिगेशन की। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई, ओवर इरिगेशन की, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी की सप्लाई जो है फील्ड्स में होनी स्टार्ट हो गई। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ओवर इरिगेशन करने से सॉल्ट में, डीपर पार्ट में जो भी आपके सॉइल में सॉल्ट कंटेंट होता है, that starts rising upward because of the capillary action। अब कैपिलरी एक्शन ऐसा समझ लो जैसे आप देखते हो ना कि एक दिया होता है केरोसिन वाला, उसको हमने एक रुई उसमें डाली है और वो केरोसिन को जो ऊपर तक पुल कर रहा है, तो ये क्या कैपिलरी एक्शन है बेसिकली, एक लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन से क्या होता है बेसिकली कि एक्सेसिव सॉइल, मतलब एक्सेसिव वाटर लॉगिंग से या एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर से क्या होगा फील्ड्स में कि जो डीपर पार्ट्स में जो सॉल्ट कंटेंट है इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड, और वो सॉइल के ऊपर क्या होगा, वाइट वाइट पैचेस डेवलप कर देगा। So that is indicative of the fact that the soil has been salinized, soil में salt content increase हो गया। Okay, काफी आइडिया मिल गया होगा। So green revolution में क्या था बेसिकली कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फार्मर्स थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये हम जो है क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं कि कई एरियाज में सक्सेसफुल रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दीज रीजन्स दे वर द आउट परफॉर्मर्स, ओवर परफॉर्मर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थी, क्योंकि कंपैरेटिवली ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इस रीजन में वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा ज्यादा एफ्लुएंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, सो क्या होता था कि दे कैन इजीली अफोर्ड दीज ट्यूबवेल्स एंड एवरीथिंग, और ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम से क्या हुआ, सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि ऐसी सॉइल कई सारे क्रॉप्स के लिए जो सूटेबल नहीं रहती है, फिर बाद में ऐसी सॉइल की सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू यूज जिप्सम या अदर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है, फार्मर का इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब फार्मर, आप सोचो कि पहले ही उसका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, फर्टिलाइजर्स पे पैसा खर्च करना है, इंसेक्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे पैसा खर्च करना है, एंड एट द सेम टाइम ही हैज टू स्पेंड ऑन दीज एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आल्सो टू रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ इसके जो है इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं। चलो अब आगे मूव करेंगे, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, वन इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, देन अनदर वर्ड इज द एग्रो इकोलॉजी, एंड देन वी हैव दिस सैलिनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देयर आर थ्री टॉपिक्स और सब टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, देयर आर थ्री और there are two or three topics and subtopics which are related to each other. So every question, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, it has certain components. It has certain components. I'm writing to this corner. I hope it will be visible to everyone. Okay. So every question has three components. The first one is the interrogative term. Interrogative term. The first part is the interrogative term. Then the second one is the central theme. Central theme. Then we have the substantive part, and the fourth one is the tags. So most of the questions in UPSC, they will be having these four components. The first one is the interrogative term, second one is the central theme, third one is the substantive part, and the fourth one is the tags. Like if you talk about this particular question, so in this particular question, the word discuss, this word discuss, it is the interrogative term. Then the central theme is the green revolution. The central theme is the green revolution. And then
द सब्सटेंटिव पार्ट इज द एग्रोइकोलॉजी। एक सेंट्रल थीम है, एक सेंट्रल टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, उससे ही एसोसिएटेड दूसरा पार्ट क्या हो गया, सब्सटेंटिव पार्ट। And after clubbing these two parts, they will be reaching to a particular tag, and this salinization is the tag. ठीक है, अभी हम इनको थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे क्वेश्चंस को. Even you guys can also try to write the answer on this thing, and you can send your answer copy on the given WhatsApp number. It's running on the scroll 8794515388. Okay, so you can try to write answer on this particular topic. So interrogative term is discuss. Then we had a central theme, green revolution. Then we had a substantive part which is known as agroecology, and the tag is the salinization. This is one question. Okay, this is one question here. So whenever you are starting the answer, you have to give preference to the central theme. Central theme को सबसे ज्यादा preference देना है. So start your answer or essay with a central theme, and the introduction should be based on central theme. The introduction should be based on central theme. Okay, then of course the central theme should lead you to the substantive part, क्योंकि इसको एग्रोइकोलॉजी की बात कर रहा है. एग्रोइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चरल रीजन और इकोलॉजी, यानी वहां का जो एग्रो इकोसिस्टम हो गया, ये उसकी बात कर रहा है कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. सो वन ऑफ द इम्पैक्ट आई टोल्ड यू कि ओवर इरिगेशन से क्या हुआ, सॉइल सैलिनाइजेशन हो गया. अब सैलिनाइजेशन इज ऑलरेडी रिटन हियर एज द टैग. तो टैग जो भी होता है उसके लिए आपको एक छोटा सा सेपरेट पैराग्राफ आंसर में देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि टैग पे स्पेशल रेफरेंस लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू सैलिनाइजेशन. तो इस वाले पार्ट के लिए आपको एक सेपरेट जो है पैरा देना चाहिए, छोटा सा पैरा आप दे सकते हो. तो उसी में आप ये ओवर इरिगेशन वाला पार्ट लिख सकते हो. और क्या कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकते हैं, तो आप देखोगे ओवर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, देन यू नो कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें लिख सकते हो कि क्या क्या उसका पड़ा था इम्पैक्ट एग्रोइकोलॉजी पे. ओके, और क्या क्या पड़ा था इसमें. दूसरा पड़ा है कि लाइक यू नो अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है तो उसका क्रॉप से भी इम्पैक्ट पड़ेगा. इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जब हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो क्या होगा, सम ऑफ द यू नो फेवरेबल जो भी स्पीशीज होंगी शायद वो उनकी भी डेथ हो सकती है. ठीक है, और साथ के साथ क्या होगा कि समटाइम्स इट मे लीड टू increase in some other invasive species also. So there are certain components which you can elaborate in this answer. Then coming to the part salinization. ठीक है, सैलिनाइजेशन पे आने के बाद क्या होता है कि आपको यहीं पे खत्म नहीं करना है, आपको एक जो है बेसिकली एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा. कंक्लूजन में आप अगेन एक बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक आंसर, आपको मतलब पेसिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं देना होता है. पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन कभी नहीं लिखना चाहिए. सो अब ऐसे चीज में क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि ठीक है भाई, आगे हम जब इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो पिछले ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं साथ के साथ. तो आप देखोगे कि अब जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वी आर मोर एंड मोर रिलाइंग ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना. ओके, सिक्किम, so it is India's first fully organic state also. So this organic farming and all these things, तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है इस चीज में. तो वो सब चीज को यहाँ पे आप कंक्लूजन पार्ट में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, दैट यू कैन इंक्लूड इन द कंक्लूजन पार्ट. नेक्स्ट, नाउ ये एक ही क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Yes, next question.
discuss regional disparities, regional disparities, discuss regional disparities in economic development, in economic development across West Asia or across the world, with special reference to West Asia, with a special reference to West Asia. So now this is the second question. So discuss the regional disparities in economic development across the world with a special reference to West Asia. So again, if you talk about the interrogative term, so this discuss part is the interrogative term. This discuss is the interrogative term. Then economic development. This economic development is the central theme. Then apart from this, the substantive part is the regional disparities. This is the substantive part, SP. Okay. And of course, we have the West Asia mentioned as tag. It is mentioned as tag. So these are the components of this particular question. The first one is the discuss, then central theme is economic development, substantive part is the regional disparities, and the tag is the West Asia. Here this means that you have to give it a special reference to the West Asia, कि West Asia के context में कुछ आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे mention करना पड़ेगा. Okay. Another question I can give you right now, like another question, inclusive growth is a component of sustainable development, is a component of sustainable development. Inclusive growth is a component of sustainable development. Comment. So next question is, inclusive growth is a component of sustainable development. Comment. अब देखो कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी में सबसे ज्यादा आपको कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनालाइज बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो यहां पर क्या होगा, व्हाट इज योर इंटरोगेटिव टर्म? इंटरोगेटिव टर्म इज कमेंट. Interrogative term is comment. Then the central theme is sustainable development. Okay, central theme is sustainable development.
This is the yes. I think there was the interruption in the connection. Now it is resolved. थोड़ा हो जाता है कभी कभी. Sorry for that. So in this particular question, the interrogative term is comment. Central theme is sustainable development, and the substantive part is the inclusive growth. Okay. अब कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसको जो है आपको ब्रेक करना होता है कुछ कंपोनेंट्स में. ठीक है. ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग. ऐसा नहीं कि एकदम रैंडमली कुछ देखा, इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा था तो इंक्लूसिव ग्रोथ को ही बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करना चालू कर दिया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा था और आपने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही पूरा लिख दिया सारा का सारा. तो यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन, यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इन सर्टेन पार्ट्स. सो हर क्वेश्चन में लगभग आपको एटलीस्ट 3 to 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे. वन इज द इंटरोगेटिव टर्म, another one is the central theme, fourth one is the substantive part, and the fourth one first one is the interrogative term, second is the central theme, third is the substantive part, and the fourth one is the tags. Okay, coming to the next question now. एक और क्वेश्चन देखते हैं. एग्जामिन द रोल ऑफ ओशियन करंट्स. एग्जामिन द रोल ऑफ ओशियन करंट्स. Examine the role of ocean currents on the coastal climate, on the coastal climate and the marine ecosystem. So this is another question. Examine the role of ocean current on the coastal climate and marine ecosystem. So again, अब देखते हैं सबसे पहले इसके components को. The first component is interrogative term. So here it has given examine. So examine is the interrogative term. Examine is the interrogative term. Then the central theme, role लिखा है, ठीक है ना. So the central theme is ocean currents. So this is the central theme of the question. Central theme of the questions. On the coastal climate and the marine ecosystem. On the coastal climate and the marine ecosystem. So यहाँ पर क्या है बेसिकली कि सीधा जो है टैग्स दे दिए कि इन दोनों चीजों को हमें समझाना है. तो यहाँ पे अप्रोच क्या हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ओशियन करंट. ओके, ओशियन करंट को एक्सप्लेन करना है, एक जनरल इंट्रो देना है उसके बारे में, राइट.
एंड उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा हमें कि उसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एंड देन डायरेक्टली जंप टू द पार्ट की उसका कोस्टल क्लाइमेट क्या इंपैक्ट है एंड व्हाट इज देयर इंपैक्ट ऑन द मैरीन इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे वर्ड आया हमारा एग्जामिन. अभी एक एक करके हम सारे वर्ड्स को समझेंगे. नेक्स्ट, illustrate. Illustrate the mountain building process. Illustrate the mountain building process through. Illustrate the mountain building process through plate tectonic theory. Through plate tectonic theory. Plate tectonic theory. Citing example of Himalayan orogeny. Orogeny मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ही होगी, ठीक है ना. So illustrate the mountain building process through plate tectonic theory, citing example of Himalayan orogeny. So now coming to this question, if you have to explore the components, then what are the components? So here the first component is the illustrate. First component is illustrate. So here this illustrate is the interrogative term. It is the interrogative term. Illustrate. Then the central theme, the mountain building process through plate tectonic theory. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी is one of the very bulky and one of the very revolutionary theory in geography. So अगर पेपर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ कोई दूसरी चीज ऐड की हुई है तो सेंट्रल थीम इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हम बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो सेंट्रल थीम इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. Then the substantive part is, of course, it is mountain building process, or which is also known as orogenesis. The mountain building process is the substantive part. It is the substantive part. And then ये खुद ही यहाँ पे वैसे बोल रहा है citing example of. तो ये हमारा टैग है हिमालयन ओरोजनी, यानी हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाना है. तो दिस इज द टैग. दिस इज द टैग. सो मोर और लेस एवरी क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली. ठीक है, हर क्वेश्चन में जो हमें कंपोनेंट्स को ब्रेक करना होगा वो बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द इंटरोगेटिव टर्म, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम. जरूरी नहीं कि सेंट्रल थीम एकदम इंटरोगेटिव टर्म के बाद ही लिखी होगी. समटाइम्स हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. जैसे इस टॉपिक में हम देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अब अगर मान लो थोड़ा सा अगर हमने इसमें इमेच्योरिटी अगर दिखाई, अगर थोड़ा सा हमने किसी तरह अगर इसमें गलती करते हैं तो कई बार क्या होगा, लोग माउंटेन बिल्डिंग को सेंट्रल थीम समझ लेंगे. दोनों टॉपिक में हमें ये देखना है कि विच इज हैविंग मोर वेटेज, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. Plate tectonic theory, it has explained every mechanism, almost every mechanism, be it mountain building process, be it formation of block mountains, be it formation of rift valley, ठीक है, be it formation of be it occurrence of earthquake, सारी चीजें यहाँ पर. I hope I am clear till this point.
ओके, नाउ राइट डाउन द हेडिंग. सो इन द प्रीवियस, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा है कि कहीं पे डिस्कस लिखा है, इलस्ट्रेट लिखा है, एग्जामिन लिखा है. सो ये सबको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव टर्म्स बोलते हैं. सो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द इंटेरोगेटिव टर्म्स की यूपीएससी ने अभी तक कौन कौन से टर्म्स को यूज किया है. सो लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव टर्म्स, list of interrogative terms. So first one is the discuss. First one is discuss. अब अगर ऐसी टर्म यूज हो रही है डिस्कस, तो इसमें हमें क्या क्या करना है? सो यहां पर बेसिकली वी हैव टू डिस्कस बोथ मेरिट्स, merit and demerit of the topic, merit and demerit of topic, plus the discussion should be multidisciplinary. Okay, it should be multidisciplinary and it should be in general in nature. In general nature, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता है. तो डिस्कस में बेसिकली हमें मेरिट्स, डीमेरिट्स, थोड़ा इस टॉपिक को हम दूसरे टॉपिक से रिलेट करके, बट इन जनरल हमें जो है इसका डिस्कशन यहाँ पे करना है. देन नेक्स्ट टर्म इज इलैबोरेट. नेक्स्ट टर्म इज इलैबोरेट. अब देखो, इलैबोरेट में और जो पहला की टर्म था डिस्कस, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी. एक बेसिक डिफरेंस ये होगा कि इलैबोरेट में यू हैव टू डिस्कस द टॉपिक एट अ वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा. जैसे पहले वाले में इन जनरल था, यहाँ पे क्या होगा, इलैबोरेट में थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, एक लार्जर लेवल पे डिस्कशन करना पड़ेगा, डिटेल्ड डिस्कशन करना पड़ेगा. सो इलैबोरेट में ये चीज हम देखने को मिलेगी. तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिस्कस, बट अ पॉइंट इज कि यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा. ओके, टॉपिक जो काफी डिटेल्ड हो जाएगा इधर. यस गाइस.
after this next term is, ये काफी बढ़िया टर्म रहती है और थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ जाते हैं इसमें. This term is known as examine. This term is examine. अब ये जो टर्म है ना, इसको हम जो है डॉक्टर्स अप्रोच भी कहते हैं. डॉक्टर्स अप्रोच, डिटेक्टिव अप्रोच. अब जैसे डॉक्टर है, डिटेक्टिव है या लॉयर है, आप इस प्रोफेशन से हो तो प्लीज मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज. लेकिन क्या होता है इसमें, होता है एकदम तह तक जाना, एकदम एक चीज को डिटेल में एनालिसिस करना. तो वही चीज यहाँ पर. तो एग्जामिन है तो बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच होना चाहिए. डिटेल्ड अप्रोच मींस in depth coverage. In depth coverage plus it should be supported by facts. सिर्फ ऐसा नहीं हवा हवा बात करें, facts के साथ. ओके, facts के साथ यहाँ पे बात करें. मान लो अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन है एंड प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट ईयर 2000 अर्बनाइजेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. तो वहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ देना पड़ेगा. कुछ ग्राफ्स आप बना सकते हो, कुछ पाई डायग्राम बना सकते हो कि till 1950 this much area was under urbanization. Now almost this much portion has been urbanized. अब excessive urbanization के क्या प्रॉब्लम होते हैं कि इंडिया इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री और already we are just 2.4% of the land mass of the world. And we are accommodating 17.5% population of the world. So per capita land availability पहले ही बहुत कम है. ऊपर से we are agro based country. Majority population आज भी हमारी agro sector पे डिपेंडेंट है. अब ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा excessive urbanization होगा तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में कि जो fertile soil है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज होनी चालू हो जाएगी. कई जगह ऐसे केसेस आते भी हैं. ठीक है. तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप कुछ फैक्ट्स को देकर कुछ एग्जांपल okay, Francis, this was a Francis the smart boy. So I think now you'll be in third year. Yes. They are all my lovely students from Bangalore. Okay. Thank you guys. Thank you. So examine basically you have to take the detailed approach, in-depth coverage and facts को यहाँ पे use करना है. Facts का मतलब समझ में आएगा सबको कि data को use करना है basically. That use data here. Okay. Next. So next term is critically examine. ठीक है. इसकी आगे जोड़ देते हैं. Next term is critically examine. अब critically examine हो जाएगा तो क्या होगा, approach investigative भी रहेगी. ठीक है. Approach investigative भी रहेगी. But here we have to highlight the negative points. Here you have to highlight the negative points. लेकिन एक एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि अनेक चीज देखा है जब कहीं पर एक नेगेटिव लिखा होता है, स्टूडेंट्स दे स्टार्ट जस्ट दे जंप ओवर इट विद ऑल देयर नेगेटिव अप्रोच कि ठीक है बस सब कुछ इसके बारे में हमें अच्छे से नेगेटिव बता दें. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यूपीएससी में आप सारी चीजों को एकदम नेगेटिव में लिख के आओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो द बेस्ट वे इज कि अराउंड 80% तक इसका पार्ट क्वेश्चन का इट शुड बी हैविंग क्रिटिसिज्म, बट 20% पार्ट को आप या तो न्यूट्रल या थोड़ा सा मेरिट बेस आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आएंगी आपको समझ में. लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन है तो यस ऑलमोस्ट 80% पार्ट हैज टू बी बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म. नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चल रहा है. इन्हीं क्रिटिसिज्म में आप कहीं कहते ये भी कर सकते हो कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पहले सारा क्रिटिसिज्म लिख दिया लिखते पार्ट में एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटन अराउंड 120% पार्ट यू हैव रिटन अबाउट द मेरिट्स. ऐसे ना करके
आप जो क्रिटिसिज्म लिख रहे हो उसमें कहीं पे हिडन एस्पेक्ट्स में आप हिडन एस्पेक्ट्स भी आप जो है मेरिट्स को भी थोड़ा सा शो कर सकते हैं। तो ये अप्रोच यहाँ पे चलती है, लेकिन 80% 85% कंपोनेंट इसका जो है नेगेटिव हाइलाइट्स पे ही डिपेंडेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली next term is analyze. Next term is analyze. So analyze में basically क्या है? It is a mix up of. It is a mix up of. क्योंकि analysis में क्या होगा? Examine भी होगा, discussion भी होगा, and it will be having your own opinion also. Own opinion plus own opinion के साथ साथ एक constructive and optimistic conclusion. For example, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Constitution of India is a borrowed bag. Is a borrowed bag. Analyze. तो मान लो ऐसा क्वेश्चन है that Constitution of India is a borrowed bag. Now in this situation, majority of the students जिन्होंने आंसर राइटिंग को मान लो जिनका होल्ड नहीं होगा, what they will do? वो इसको सीधा टेबल बनाना चालू करेंगे जो सारी बुक्स में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है कि हमने कौन सा फीचर कहाँ से लिया है और काम कर रहे हैं। बट ये देखो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बोरोड बैग। थोड़ा सा एक नेगेटिव फीलिंग वाला ये जो है आपका स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि दिखा देंगे ठीक है हमने इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से ले लिया है, दैट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए, यस एवरीथिंग वी हैज कॉपीड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, हेंस प्रूव। ये मैथमेटिक्स में है कि हेंस प्रूव करना है, ठीक है ना? जैसे जब मैथमेटिक्स की इसका आप लिखोगे हेंस प्रूव, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको मैच्योरिटी अपनी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बोरोड बैग, एक नेगेटिव टर्म है। अब इसको एनालाइज करने के लिए क्या, तो ठीक है आप यहाँ पे कई सारी चीजों को ये एग्जामिन भी आएगा, डिस्कशन भी आएगा और ओन व्यू भी आएगा। तो ओन व्यू और कंक्लूजन आपके अपने होने चाहिए और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नोट पे होने चाहिए। एग्जामिन में आप क्या लिखोगे कि ठीक है कि कौन कौन सी चीज हमने दो चार पॉइंट्स अपने लिखे ऐसे कि किस किस से चीजें रिलेटेड लगती है, किस किस कंट्री से हम लोगों ने चीज लिया है। लेकिन आगे क्या लिखोगे कि वी आर नॉट टेकिंग द कंटेंट, we have taken the concept. Okay, we have taken the concept, we are not taking the content. And of course when India is one of the last democracy who got freedom, तो हमारे पास जब हम अपने कोई एक चीज बना रहे हैं, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि we will be taking into consideration the constitutions of other countries also, कि how good they are at their constituting part. So it was quite obvious, it was quite natural thing. But we have taken the concept, we have not taken the content. ठीक है, या हमारे यहाँ पे लिखा है किंग क्वीन ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है ना? हमने तो कई वर्ड ऐसे यूज किए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से अप्रोच यहाँ पर रखना है कि अगर कहीं पे एनालाइज वर्ड आ रहा है तो एग्जामिन, डिस्कशन, ओन ओपिनियन और कंक्लूजन। ओन ओपिनियन, कंक्लूजन इट शुड नॉट बी बायस्ड और ये ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि जब कोई पढ़ रहा है आंसर को, द पर्सन शुड बी एबल टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी आल्सो कि हाँ ये पर्सन है और इसके पास पर कितना ज्यादा ये मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन है, कितना आगे के लिए मतलब एक पॉजिटिव नोट पे चीजों को लेता है सोचना, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी क्लासेस में कहीं बोला है कि योर आंसर कॉपी इज द मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है? योर आंसर कॉपी इज द मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी। और एग्जामिनर जब कॉपी लेके बैठेगा आपकी, तो उस कॉपी में आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। ही इज नॉट नोइंग योर नेम, योर जेंडर, योर रिलीजन, योर कास्ट, नथिंग। वो बस ये देख रहा है कि हाँ ये फ्यूचर में एक जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज पर्सन में शो हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं।
ठीक है, तो इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है। तो कहने वाला ये है कि आंसर इज अ मिरर ऑफ अ पर्सनालिटी, तो जैसे वाला उस मिरर को अच्छे से बना के पूरा में पर्सनालिटी, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, इस तरह की चीजें आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट कीवर्ड, so moving to the next keyword is critically analyze। अब critically analyze का फिर से क्या होगा, critically analyze में क्या होगा फिर से, यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, और साथ के साथ जो उसकी रिपरकशंस है उनको भी यहाँ पे शो करना। फॉर एग्जाम्पल, critically analyze the success of green revolution in India। ओके, ऐसा कोई टॉपिक है, मान लो कोई बहुत ही नीम एंड फेम वाला टॉपिक है, काफी पॉपुलर टॉपिक है, और लेकिन उसमें क्रिटिकली एनालाइज आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके रिपरकशंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है शो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज yes, am I audible? Okay, so next is the okay, so next keyword is illustrate। Next keyword is illustrate, tools, examples, examples, plus case studies, plus case studies। So diagrams, maps, graphs, tools, examples, case studies, these all things can be used when the keyword or the interrogative term is illustrate. All these things can be used here. Okay. Next we have the elucidate। Next term is elucidate। अब देखो elucidate और illustrate दोनों ऑलमोस्ट मतलब दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। elucidate ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज में देखने को मिलेगी। elucidate में फॉर एग्जांपल यू हैव टू गिव सुटेबल एग्जांपल्स, देन केस स्टडीज और डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज, इनके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। अब यहां पे फिर से क्या है कि जैसे बहुत सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन with लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। सो एक्सप्लेन में बेसिकली ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। आफ्टर दिस एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे जो अभी पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये डाटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बोरोड बैग. कमेंट. तो अगर वर्ड है कमेंट, इफ द इंटेरोगेटिव टर्म इज कमेंट, देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच? तब क्या अप्रोच होना चाहिए? तो कमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये कैंडिडेट की अपनी पर्सनल समझ को, ठीक है, ये कैंडिडेट की अपनी पर्सनल समझ को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है ऐसा इंटरोगेटिव टर्म. सो कमेंट में बेसिकली क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन. इट इज ओपिनियन बेस्ड और द व्यू पॉइंट, ओपिनियन बेस्ड और व्यू पॉइंट, ठीक है, व्यू पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका पर्सनल परसेप्शन, आपका अपना परसेप्शन क्या है, व्हाट्स योर ओन परसेप्शन और व्हाट्स योर ओन अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके हमें बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा अपना बैलेंस्ड व्यू रखना पड़ता है. आपको मतलब कुछ ऐसी चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी पॉइंट से बायस नहीं दिखने चाहिए. यू शुड नॉट अपीयर टू बी बायस्ड विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी. कोई कहने लगे अच्छा जी अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले के लोग जितने थे उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, अब बहुत काम होने लग गया है. ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है. गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, जो भी उसको चलाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू गिव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, वेरी बैलेंस्ड व्यू पॉइंट और पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके यहाँ पे जो आपको आंसर देना है. नेक्स्ट वन इज गिव एन अकाउंट ऑफ. सॉरी, गिव एन अकाउंट ऑफ. कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा गिव एन अकाउंट ऑफ. अब यहां पे क्या होता है बेसिकली कि you have to give your answer in a point wise format. Point wise format. You have to use a lot of data, lot of examples. You have to use a lot of data, lot of examples. Okay. Then next point is, next term is enumerate. अब give an account of या enumerate, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. आई होप ये स्क्रीन पे इतना दिखाई दे रहा होगा सबको. लेट मी चेक दिस. Otherwise I'll write this side. Enumerate. So enumerate और give an account of almost similar ही रहेंगे. Similar ही अप्रोच यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा. Next one is compare and contrast. For example, there can be a question related to compare and contrast temperate cyclone with that of tropical cyclone. Compare and contrast temperate and tropical cyclone. Okay. अब कंपेयर भी आ गया, कंट्रास्ट भी आ गया. कंपेयर का मतलब हो गया कि जहां पे हमें थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना होता है हमें कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट. सो ये बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये उसी की ही एक हम कह सकते हैं उसी एक वेरिएंट है. सो 80% तो आपको यहाँ पे डिसिमिलरिटी देनी है. अगर इस किसी केस में सिमिलरिटी थोड़ी सी रहती है तो उस केस में आप 20% आप इंक्लूड कर सकते हो. अदरवाइज सारी की सारी आप सिमिलरिटी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. आर यू गेटिंग? जैसे मान लो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन है, अब उनमें सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन सारे उसमें डिसिमिलर पॉइंट्स ही है. सिमिलर पॉइंट्स बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है.
तो वहां पे आप पूरा चीज कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी दिखाई दे रही है, तो 80% पार्ट आपको रखना है डिसिमिलैरिटी पे, रिमेनिंग 20% यू कैन यूज फॉर द सिमिलैरिटी एस्पेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप। नेक्स्ट वन इज कोरिलेट। नेक्स्ट टर्म इज कोरिलेट। कोरिलेट, अब इस टर्म में कोरिलेट में बेसिकली क्या है कि यू हैव टू हाईलाइट द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यू हैव टू हाईलाइट द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कोरिलेट में। Then we have the next term. Again, it is very important. Throw light on. अब ऐसा कोई क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्च लगा लाइट मारनी है, तो थ्रो लाइट ऑन क्या है कि यू हैव टू हाईलाइट द पॉइंट्स। ये हाईलाइट के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, थ्रो लाइट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम चीज है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएट। नेक्स्ट टर्म इज इवैल्यूएट। So in this term evaluate, you have to make assessment also. Assessment plus futuristic vision एक होना चाहिए उसमें. There should be a futuristic vision, and of course this futuristic vision, it should be clubbed with your own opinion, और opinion positive होना चाहिए. Own opinion. So evaluate, it should be assessment plus futuristic vision and opinion. Next interrogative term which is very popular is describe. Next important term is describe. और वो जो describe जो term है basically describe and discuss, they are almost same. Describe and discuss, they are almost same. Describe में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा अपन नैरेटिव रखना होता है, एक नरेशन फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट टाइप. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द सजेस्ट. Next term is suggest. Suggest. So suggest में क्या है कि first of all you should use small paras, small paragraphs को use करना है. Then small paragraphs के साथ साथ opinion, a personal opinion, and yes, there should be multiple suggestions. Multiple suggestions. मान लो water conservation से related कोई है. Water conservation is not the all, it is not only duty of government. So सरकार की ड्यूटी नहीं है वाटर कंजर्वेशन के लिए, हमारी भी ड्यूटी है. ठीक है. अब जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट को देखा है, तो वो क्या करता है कि उसने बहुत ऐसी सजेस्टिव फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया था उसको वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड. तो वहां पे क्या होता है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ओपिनियन बेस्ड, सजेशन बेस्ड, कमेंट बेस्ड, दे गिव्स यू एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर ओन कैंडिडेचर. मैंने बोला ना कि जो एग्जामिनर है वो तो आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा आपकी आंसर कॉपी से, आप कितने अच्छे हाईली क्वालिफाइड हो,
आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कितनी आपने पढ़ाई करी है, दैट डजंट मैटर, वो चेक करेगा, वो आपको जज करेगा आपके आंसर कॉपी के हिसाब से। अब ये जब आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस देते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट अपना शो करते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ना भी होता है। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, तो उसमें उसने सजेस्ट किया कि भाई जो हाउस होल्ड्स के अंदर जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, उनका एक आरओ वाटर प्यूरिफायर्स का जो आउटलेट पाइप होता है, जो सिंक में जा रहा होता है सीधा, दैट वाटर शुड बी यूज्ड। इस वाटर को कलेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। तो सजेशंस आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। सजेशंस कितने ज्यादा प्रैक्टिकल है या कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये नहीं सोचना है आपने, ठीक है। मतलब ऐसा भी सजेशन नहीं होना चाहिए कि एकदम ही पॉसिबल ही ना हो, लेकिन मान लो कि कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, तो वो आप जरूर दो, मतलब ओरिजिनलिटी। यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन लिखा भी है कई जगह कि वो एक ओरिजिनलिटी वाले पार्ट पे जो उनका ज्यादा कंसर्न होता है। तो ओरिजिनलिटी आती है ऐसी चीजों पे, क्योंकि ये कहीं आप रटे नहीं हुए, ठीक है ना। या मान लो कुछ चीज रटी भी है कि 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स आपने रटे हुए हैं, पर 2 3 4 पॉइंट्स आपने कुछ ऐसे इनोवेटिव दे दिए, तो वही तो आपको आपके आंसर कॉपी को दूसरे के आंसर कॉपी से अलग बनाएगी ना। सो सजेस्ट। देन लास्ट इंटरोगेटिव टर्म which is quite popular is justify. Next one is justify. Justify में बेसिकली आपको एक डिटेल्ड अकाउंट पूरा देना पड़ेगा, प्लस यू हैव टू गिव several evidences, examples, all these things. तो ये आपको जो है जस्टिफाई वाले पार्ट में जो है देना होता है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, ओके। आप लोग आंसर्स लिखिए। आंसर्स लिखने के बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखो। द बेस्ट थिंग इन आंसर राइटिंग इज टू गेट स्टार्टेड। अगर आप उस दिन का इंतजार करोगे कि कब मेरा बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, कब मैं इसको बहुत ही सुपर डुपर टाइप का आंसर लिखूंगा या लिखूंगी और तब मैं चेक कराऊं, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ ओनली। तो आप क्या करो, आंसर लिखो अपने, एंड आंसर्स लिखने के बाद जो एग्जाम IQ का व्हाट्सएप नंबर है 8794515388, तो इस पर आप अपनी स्कैन कॉपी, मतलब आंसर कॉपी जो भी है उसको PDF में स्कैन करके जो है यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं या और भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके पास भी कॉपी जाएगा, हम लोग फिर आपको रिवर्ट कर देंगे इस चीज में। सो जस्ट ट्राई टू गेट स्टार्टेड। वंस यू गेट स्टार्टेड ना, शुरू के एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर लिखने के बाद बाय डिफॉल्ट आपका जो फियर साइकोसिस है काफी कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन वेल। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा होगा तो बाकी लोगों को भी थोड़ा शेयर कर देना, दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल जाएगा जो कोचिंग वगैरह में नहीं जा पाते हैं, या मान लीजिए कि कोचिंग में भी जा रहे हैं लेकिन ट्रैवल कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, तो इट्स टोटली अप टू यू। आप देखिए आपको कैसे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।